वी फॉर यू रेडियो। मेरा नाम अनुपम और मेरे साथ जुड़ी हैं शमीम अमीरी, उजाला हीलिंग सीजन EFT प्रैक्टिशनर इन एडमिंटन। और शमीम जी इज़ नॉट न्यू टू वी फॉर यू रेडियो। पहले तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उनका। उन्होंने वी फॉर यू रेडियो प्लेटफॉर्म चुना अपने पॉडकास्ट को लॉन्च करने के लिए। शमीम अमीरी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क रिगार्डिंग टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। और इस बार का जो पॉडकास्ट लेकर आ रही है शमीम अमीरी जी, वो तो मेरे ख्याल से इट इज़ हार्ट रेंचिंग। कहते हैं कि जख्मों को दिखाने के लिए खून निकलना ज़रूरी नहीं होता है, और जब आंसू आंसू ही सूख जाएं तो दर्द का एहसास भी नहीं होता है। सो बुलिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर आई थिंक each one of us have gone through at some stage, because इसकी कोई परिभाषा होती ही नहीं है। ये महसूस किया जाता है और चुपचाप सहा जाता है। शमीम जी, आप क्या कहती हैं? हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Absolutely. Like I talk about it in my podcast that I had to become vulnerable. मुझे आगे आना पड़ा ताकि we can normalize it. Sometimes हम लोगों को देखते हैं और हमारा persona देख के कभी कोई ये नहीं expect कर सकता है कि हमने भी कोई bullying का experience किया होगा. Because as human being हम अपने आप को इस तरीके से develop करते हैं कि हम किसी को show नहीं करते हैं कि मुझे भी कोई तकलीफ हो सकती है या मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा. And I think bullying is that khatarnak is the only word that I can think of. It is very, very khatarnak. And in my podcast, we've only talked about kids. कि हम culturally जो है वो we are responsible for that. हमने जो culture अपने बच्चों के लिए create किया है is what we see now. So bullying की start हम वहाँ से कर सकते हैं कि हम उसको actually accept करें कि it is a real thing, ये हो रहा है, चाहे we accept it or not. So I think that is where I would like to start is that कभी-कभी कुछ सीखने के लिए हमें कोई चीज़ unlearn करनी पड़ती है। हमारी जो belief system जो हमें बताया गया है culturally, which is कि कभी किसी को ना नहीं बोलना। एक अच्छा बच्चा जो है वो सबकी बात सुनता है, बड़ों की इज्जत करता है, fine. But there has to be that boundary, there has to be a line where we can start to believe our kids when they come home and tell us something कि ऐसा हुआ है, right? Rather than कि ये तुम्हारे दिमाग में होगा, ये तो होता है, ignore करो, जाने दो, those is the birth of bullying. That's where it all starts. You know what, जब मैं कनाडा आया था, बुलिंग शब्द का मेरे ख्याल से सही मतलब, सही मायने मैंने यहीं आके जाना। ये Yeah. जब आसपास माहौल देखा शमीम जी, and you understand that our kids, I'm thankful to my kids actually, because they have no tolerance for it and they've been raised in a society where they are able to at least voice up. Right. और ज़रूरी यह है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं। ये पारिवारिक जो माहौल घर का होता है वो बहुत मैटर करता है और हमको इनकरेज करना पड़ेगा बच्चों को। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो वी फॉर यू के लिसनर्स हैं, एडमिंटन, कैलगरी, टोरंटो, वैंकूवर, पहले तो उजाला हीलिंग इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। शमीम अमीरी जी ने ये शुरू किया और इसको शी इज़ EFT प्रैक्टिशनर इमोशनल ट्रामा, if I'm right, इसका full form emotional Freedom technique. sorry, Emotional freedom technique. फ्रीडम टेक्निक, यस। और इसके आने के साथ इन्होंने फिर अपने पॉडकास्ट शुरू किए, 3 लॉन्च किए हमने। और अभी यू कैन लिसन टू आवर पॉडकास्ट ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, हमारे रेडियो पर भी इनके पॉडकास्ट हैं। तो मैं तो सबको कहूँगा कि सुने, लेकिन हर एक चीज़ की अपना एक अलग ऑडियंस होती है। बुलिंग का जो आपका पॉडकास्ट कल रिलीज हो रहा है, तो बताना चाहता हूँ, हर एक नया पॉडकास्ट हर महीने आखिरी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, वी रिलीज अ न्यू वन विच इज कमिंग टुमारो। इट इज ऑन बुलिंग। बहुत ही दिल को छूने वाला टॉपिक है। और तो आई वांटेड टू आस्क यू शमीम जी, हु शुड बी हु शुड लिसन टू दिस पॉडकास्ट?
वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक एवरीबडी शुड। कभी कभी हम, जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि जब हम कनाडा में आए, हमें तो बुलिंग के बारे में पता भी नहीं था। इवन ग्रोइंग अप वी डिडंट नो व्हाट बुलिंग वाज। एंड इन माय पॉडकास्ट आई टॉक अबाउट व्हाट इज बुलिंग, राइट? बुलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम किसी को ताने देना, झाड़ना, पॉइंट करके बात करना, बदतमीजी करना, जोर लगाना, राइट? दीज आर ऑल द साइंस। So I think bullying हर level पे होती है. As you know, I know that I volunteer at the senior center at the Millwood Senior Center on Fridays, and seniors are being bullied I know. because they don't have the courage. और वो डरे हुए लोग होते हैं, right? So I think the audience is it's everybody, all of us, because we have all experienced bullying in our life in some shape or form. बहुत सही बात। और मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे I agree to every point you said that as human beings we have seen it, we have felt it, क्योंकि कोई परिभाषा होती नहीं है। क्योंकि um, वो भाषा को लेके हो सकता है, वो रिलीजन को लेके हो सकता है, वो आपकी मोटे हैं पतले, स्किन कलर, Yeah, एजुकेशन, फिंगर पॉइंटिंग जैसे आपने कहा, नेम कॉलिंग, और yeah, आपको लगता है कि अगला आप पे हावी होता है। कभी-कभी साइलेंस भी होता है बुलिंग। yeah, yeah, some people bully you silently, yeah, राइट? yeah. सो बट खास बात ये है कि एंड अगेन मैं जब सुन रहा था आपका प्रमोशंस एंड ऑल दैट, एंड आई फॉलो यू वेरी क्लोजली, तो मैंने महसूस यही किया है शमीम जी कि अवॉइडेंस इज नॉट अ वे टू रेजिस्ट और टू ओवरकम और कोप। अवॉइडेंस से कुछ नहीं होगा। मैं मेरे ख्याल से यस, लोग कहते हैं ना कि साइलेंस इज गोल्डन। मेरे ख्याल Mm, से एक तरीका होता है हाउ मैटर्स, एंड यू हैव टू जस्ट stop it right then and there with a smile on the face. And sometimes when we hear people saying, are you bullying me, just ask a question, yeah, are you trying to bully me? yeah. वो पीछे बैक ऑफ होता है। जो जो कर रहा है उसको एकदम से मैसेज मिलता है कि Right. लगता है कि he or she has crossed that fine line। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बार आपने किड्स पे किया है, क्या और तरह की बुलिंग को भी आप कवर करेंगे अपने पॉडकास्ट पे? Yeah, this is really the tip of the iceberg, right? What you're talking about, some kids are very strong, some human beings are very strong. That's great, but the majority of people are not. Majority of people के अंदर वो हिम्मत जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, वो हिम्मत टूटी हुई है. So in my previous podcast I had talked about livable and lovable house, right? So now अब हमें जो है ना lovable को एक step आगे बढ़ा के अब हमें हिम्मत लानी है. अब हमें courageous बनना है. And courageous बनने के लिए we need support. So, and support starts from home, right? To believe when these things happen. And culturally हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे आप मेरी स्टोरीज कल सुनेंगे कि एक बच्चे के पास ऐसी स्पेस घर की या कोई बंदा उनकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसको वो बिंदास कुछ भी बोल सकता है। क्या दैट्स बात कॉल्ड करेज, दैट्स कॉल्ड हिम्मत। एंड व्हेन वी डोंट हैव दैट स्पेस, then the kid becomes really quiet, and he's a perfect target for bullying because he can't defend himself. So yes, we will do more and specific bullying. This was a very generalized, and this is for kids. But to answer your question, yes, we that is the plan, to do that, to create this platform so we can normalize it, that we are not alone in this. उजाला मेरे हिसाब से पॉडकास्टिंग तो एक तरीका है बताने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का कि देयर आर सर्विसेज अवेलेबल। उजाला हीलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं बहुत छोटे शॉर्ट में। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, हाउ कैन पीपल कांटेक्ट यू? Okay, so Ujala, like you said, it's a non-profit platform. I am an EFT practitioner. I have got grief and trauma certification, suicide certification. People can reach me through WhatsApp, through my number that's, I think, coming below, या or all the social media platform, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. And the nonprofit का जो motto है is to provide unconditional support to marginalized community, right? Regardless of your gender, regardless of your race, to provide the mental health support, because
Some people are able to go get the support and pay for it, and there's some people who are unable to do that because first of all it's a taboo, and then secondly it can be very expensive. So that's the platform that Ujala was created, that with the right technique, with the right support, with the right resources, how can we reach and maximize the support in when it comes to mental health. Yeah, it's अभी जैसा आपने बताया, this is just a tip of the iceberg because दोस्तों बताऊं मैं आपको कि we are also trying to really um, popularize this particular platform, or podcasting is just a way to connect with many people out there. जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा कि हर एक जो ट्रॉमा है उसकी अपनी एक ऑडियंस होती है, जब तक आपने सहा नहीं तब तक आपने महसूस भी नहीं किया, और जो वाकई उससे दे गो थ्रू दिस these types of traumas, unfortunate, God bless their souls, but there are so many things happening around us where people are struggling. Or Ujala is a great organization, not for profit, non profit, का एक ही मकसद है कि आगे से लोग बिना पैसे को ना दिमाग पर रखे एक सर्विस को देखें, क्योंकि देर आर वेज मुहैया कराया जाएगा कि सो दैट की पीपल कैन कम फॉरवर्ड, और देर आर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, आई एम श्योर शमीम जी, दैट विल सपोर्ट. लोगों को आगे आना पड़ेगा, सिर्फ एक फ़ोन घुमाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आई एम इन नीड. आई एम श्योर प्राइवेसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए बहुत बहुत आप थोड़ा बताएं कि हाउ डू यू डील विद दैट टाइप साइड वेयर पीपल आर कंसर्न कि यार, क्योंकि शर्म वहीं आती है कि लोग क्या कहेंगे. राइट राइट एब्सोल्युटली. लोग क्या कहेंगे ने तो हमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है बिकॉज हम उस पर इतना जोर देते हैं, राइट, बिकॉज कल्चरली दैट इज अ कल्चरल boundaries that we have created. Or just like any profession, we have code of ethics where we have to live and abide by it, that, you know, no names are mentioned, and you'll have to sign a confidentiality agreement if you decide to work with me. So that is the basis of just even the start of it. The second is that you can have a consultation done. And the biggest thing is there has to be a chemistry between a client and a therapist. I think that is the biggest thing. Agar hamare andar ek chemistry aa jati hai where we can establish the trust, then we can provide you a lot more help. So confidentiality is a big thing. Honesty is a big thing, and privacy. Yes. So, you know, WhatsApp ke through, you can DM me, you can message me through Instagram, and we can set up a time. We can set up like a Zoom call, like a consultation, and we can go there. So yes, the idea is that we have to be able to open to it, that there is actually a problem. So, you know how in the beginning we were talking about the moment we accept without being resistant about it, you know. So if I can leave one message, that even before you start to pick up that phone call, know that you're not alone. You're not alone, and the hope is there, and hope is the only thing that can bring you up. And there is so much love and hope out there, and I would love to be a part of that. एब्सोल्युटली. हर रात के बाद एक सुबह होती है, उस सुबह की तलाश में हम सब घूम रहे हैं, और मैं लेकर आता हूँ वी4यू रेडियो पर उजाला हीलिंग की शमीम अमीरी के पॉडकास्ट. आई एम सो थैंकफुल दैट सच पीपल एग्जिस्ट इन एडमिंटन. और ख़ास बात यह है कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड बिकॉज उजाला हीलिंग कैन बी फाउंड नाउ ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब. ऑफ कोर्स वी4यू रेडियो भी पूरी कोशिश करेगा कि इसको एम्पलीफाई करें इस नॉइस को, सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट इट, एंड दिस सर्विस इज गोइंग टू स्टे. And of course, reminding all that every month, last Friday of every month, we launch a new podcast, उजाला का, जिसको कि हम हर एक प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेलेबल हो, इंक्लूडिंग वी4यू रेडियो का ऐप. आई रियली थैंक यू शमीम for choosing V4U Radio. We are hoping that we are able to really, even if we change one life like this, I think we've done our job. That's the bottom line. I appreciate all the hard work you do. I know it is a very tough one. आखिरी एक मिनट अगर आप अपने listeners को कुछ कहना चाहते हो तो. My ask is listen to the podcast, and if it resonates with you, then think about it.
You're not alone. I have shared 2 stories that's very personal. I have not shared this story with anybody. So Anu knows that it was a very uncomfortable and a very awkward podcast for me when you had to put yourself forward. And I think मेरा job ये है कि I can be vulnerable. I am at this stage in my life where I've done my own healing and I've done my own therapy. So I can be vulnerable. So if I can be vulnerable after listening to 2 stories, I'm sure the healing is out there for you too. So I am really, really hoping that you will all watch and maybe send me a message to see how you feel about it and how I can be a part of your healing journey. Absolutely. What a wonderful way to end the show. And again, friends, reminding all, it's sometimes okay not to be okay. So with that, thank you so much. And we are launching the broadcasting the new podcast tomorrow at 8:30 Edmonton time. So listen to it. Looking forward to it on podcast on how to resist, cope, and eliminate bullying from our lives. Thank you, Shamim. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.